Namaskar, hello and welcome to Sansad TV. I am Tina Jha. You're watching House Highlights, where we will take you through proceedings in both houses of Parliament. Let's begin with the headlines. Discussion on the motion of thanks in the Rajya Sabha. Members welcome government steps on COVID pandemic, efforts on weeding out obsolete and unnecessary laws, while opposition members question its performance on jobs, poverty alleviation and income disparities. During the motion of thanks debate in the Lok Sabha, BJP MPs praised the COVID-19 vaccination drive. Opposition parties target the government on farmers' issues. During question hour in Lok Sabha, government addresses queries on various issues including water scarcity in Maharashtra and Bihar and ethanol blending plants in Andhra Pradesh. And in the Rajya Sabha, ministers respond to questions from improving performance of sportspersons to appointment of women judges and job losses suffered by Indians in the Gulf countries. The upper house took up the discussion on the motion of thanks on the president's address on Thursday, congratulating the Modi government on how it dealt with the COVID pandemic. AIADMK MP M. Thambidurai listed out various financial packages that it had unveiled. Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi praised the government's efforts in weeding out unwanted laws. He also hit out against Rahul Gandhi's "Two Indias" remark. While in his remark, Congress MP Digvijay Singh said the gap between the rich and the poor had widened under the government at the centre. He mentioned that while direct taxes collected from individuals have fallen, the contribution of indirect taxes collected from common people has risen. Listen. On behalf of AIADMK party, I raise to thank the Honourable President's address to the Parliament, which listed the achievements of Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the government led by him, including achievements in the healthcare, infrastructure, defence, farming, startups and others. You know very well, even though we faced a lot of problems, epidemic problem, during the Honorable Prime Minister Narendra Modi period, in 8 months between April and November 2021, foreign direct investment of 48 billion was made in India. Our foreign exchange reserve exceeded 630 billion US dollars. Because of the Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity, people have benefited from direct cash transfer during the pandemic. More than 44 crore people have joined the bank system. These are all not small achievements. I must compliment Prime Minister Narendra Modi ji and his government because within a year, our government successfully given 70% adult population of the fully vaccinated. Sir, I lead the Indian contingent Tokyo Olympic Games. I was the chief of mission for Indian contingent, sir. And India, for the first time, India's making history, Indian getting all type record medals in Tokyo Olympic Games, sir. Sir, in the athletics, earlier our Bindra got the medal in the shooting. In athletics, for the first time, Indian athletes got the gold medal, sir, in the athletics. I must congratulate him, sir. आज सभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान दो हो गया है। आज इस देश में दो भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। दो भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इस कंट्री और कंट्री इस कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। जब मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर,
तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सेलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल जो बिल की प्रभावी नहीं थे लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर। कि पहली बार भारत में रक्षा मंत्रालय ने भारत में उपकरण बनाने का काम किया। जो विदेशों से आते थे सामान, उन विदेशों से न ला करके अपने देश में बनाने का काम किया और भारत को समृद्ध बनाने का काम किया और दलालों से बचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं सराहना करता हूं। The pandemic has exhausted the nations, but what is the relief to come out from such agonies? But as usual, government chooses to ignore the shrinking middle and lower income class. 8 lakhs affordable houses will be completed at rupees 44,000 crore under Prime Minister Awas Yojana in 2022-23. This means rupees 55,000 for each house. I do not understand what kind of house will be of rupees 55,000, especially in the hilly areas of the northeastern region. We can go on figures of poverty because poverty itself is open to definition. One reliable statistic says that about 15 crore Indians were lifted out of poverty in 10 years from 2006. If we go by that figure, 15 crores lifted out of poverty, we have to see along with it that 14 crores have been pushed into poverty in the last 2 years. What a credit. Pushing them back into poverty. Joblessness, I have already told you. So without an equitable economy, what does it matter whether the Indian economy reaches 3 trillion or 30 trillion? Because all of it would be going into the pockets of a few while the others go hungry. पैराग्राफ 5 में कहा क्या गया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में आज सबका साथ नहीं सोचा जा रहा, कुछ राज्यों का साथ सोचा जा रहा है। सबका विकास नहीं सोचा जा रहा। कर्नाटक का विकास सोचिए, अच्छी बात है, उड़ीसा का भी विकास सोच लीजिए, कुछ गलत नहीं है। सबका विश्वास भी लीजिए। कुछ राज्यों का विश्वास क्यों ले रहे? हमारा भी विश्वास लीजिए साथ में। और सबका प्रयास, आज सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं, सारे राज्य आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप कहीं होता है तो उड़ीसा में आज होता है। जीएसटी में सबसे ज्यादा कोई देता है तो उड़ीसा देता है। 20,000 करोड़ अगर रेलवे में कोई देता है, उड़ीसा देता है। खनिज अगर आज देश को कोई देता है, उड़ीसा देता है। मगर जब तक आता है उड़ीसा की बात, आप नकार क्यों देते हैं? उड़ीसा को आपको चाहिए जीएसटी के लिए, माइंस मिनरल्स के लिए, बट उड़ीसा को जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा? किसी भी शासन के टैक्स रेवेन्यूज का अगर आप उसका एग्जामिन करेंगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो कि टैक्स देने वाला है, दे सकने के लिए सक्षम है, उससे आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स आप आम जनता से लेते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2014-15 में जितना टैक्स कलेक्शन था उसका 55.39% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। यानी कि यूपीए सरकार में
हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे, यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57, यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। ये मूल रूप से मोदी सरकार की विचारधारा है आर्थिक नीतियों की। Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu had a word of praise for the disruption-free proceedings in the upper house on Wednesday. He, in fact, urged members to let the same spirit prevail for the rest of the budget session and also in the future as well. Listen in. Yesterday, Rajya Sabha witnessed a disruption-free proceedings after a long gap. It was delightful to watch quality debate on the motion of thanks to the President. Debate yesterday were marked by effective assertion of the achievements of the ruling party on one side and the contestation by opposition members on the other side. This is the advantage of smooth functioning of the House. I hope this spirit will continue to prevail for the remaining part of the session and also for the future. During question hour in the upper house, the government's response was sought on various issues ranging from improving the performance of sportspersons, appointment of women judges in courts, job losses suffered by Indians in the Gulf nations. This also figured during the question hour. Listen in. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के अंतर्गत देश में कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें कितना बजट आवंटित किया गया। टॉप स्कीम के तहत लगभग 452 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है महोदय। अभी तक 198 एलिट खिलाड़ी जिसमें पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के लगभग 36 जो खिलाड़ी है उनको शामिल किया गया है और उनको टॉप के कोर जो स्कीम है उनमें ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है और 254 अपकमिंग बेस्ट जो एथलीट है उनको डेवलपमेंट स्कीम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है महोदय। माननीय सांसद जी ने पूछा कि इसका क्या बजट होता है। इसका कोई भी बजट का लिमिट नहीं होता है। कोई भी खिलाड़ी के लिए उनका उत्तम प्रदर्शन के लिए जितना बजट की प्रयोजन होता है उतना इसमें आवंटित किए जाते महोदय। In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadud to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री। And with that, time for a short break here. We'll be right back. Do stay with us. Welcome back. Let's now look at the Lok Sabha proceedings. The lower house also continued its discussion on the motion of thanks to the President's address. Leaders cutting across party lines took part in the debate on the second day. BJP MPs praised the government's mega COVID-19 vaccination drive, while the opposition parties, including the Trinamool Congress,
questioned the government over issues relating to farmers. हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा मूल क्या है और किस नींव पर हम पद चलते हैं, तो उसमें मात्र दो धरातल है और ये बहुत ही कोई जटिल विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा करें, बड़ा ही सरल है। और जो दो पिलर्स हैं, जो दो खंभे हैं, वो क्या? एक हमारे सोच विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी, और उन्होंने जो एकात्मा मानवता दर्शन के बारे में चर्चा की और वहां से उभर के निकला अंत्योदय। और अंत्योदय क्या है? और हर के लक्ष्य में, हर भारतीय जनता पार्टी, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के लक्ष्य में क्या? गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं की चिंता। यह हमारा मूल रूप से देश को ले चलने का और देश के बारे में इंक्लूसिव रास्ता अपनाने का ये तरीका। The President has mentioned about farmers in several paragraphs of his address. The government must take note of a very disquieting feature again, Honorable Speaker, sir. Last year, by this time, the FCI had lifted 4 lakh metric tons of rice from Odisha. This year, only 12,000 metric tons has been lifted. कहाँ 4 लाख, कहाँ 12,000? और मुझे मालूम है कि तेलंगाना के मेरे मित्र आज मेरे इस हाउस में बैठे हैं, उनकी भी यही पीड़ा है. So this has to be totally looked at again by the Honorable Prime Minister. Otherwise, there is going to be a very serious problem, because how are you going to look at the farmers of this country to prosper if the government, if the FCI refuses to do what is mandated by law? It is mandated by agreement. So therefore, I believe that the Honorable Prime Minister personally must look into this. जिस तरह से जो चल रहा है, जो अंबेडकर जी ने उस टाइम में जो राज्यांग को जो है ना जो लिखा था, उस टाइम का परिस्थिति अभी का परिस्थिति बहुत डिफरेंट है. और अंबेडकर जी का जो राज्यांग के अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार हम लोग का तेलंगाना भी मिला है. तेलंगाना के लिए हमारा नेता केसीआर साहब ने 15 साल डे एंड नाइट जो है ना फाइट किया है. फाइनली जो है ना वी गॉट द तेलंगाना, सेपरेट तेलंगाना 2014 में. इसका अभी तेलंगाना बनने के बाद पहले कैसा था, अभी कैसा है, हमें हाउस से देश को बोलना चाहता है. तेलंगाना बनने का पहले हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर का काफी प्रॉब्लम था, किसान के खेती के लिए काफी प्रॉब्लम था, और उसी तरह से जो है ना पावर नहीं मिलता था. हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा मूल क्या है और किस नींव पर हम पद चलते हैं, तो उसमें मात्र दो धरातल है और ये बहुत ही कोई जटिल विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा करें, बड़ा ही सरल है. और जो दो पिलर्स हैं, जो दो खंभे हैं, वो क्या? एक हमारे सोच विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी, और उन्होंने जो एकात्मा मानवता दर्शन के बारे में चर्चा की और वहां से उभर के निकला अंत्योदय. और अंत्योदय क्या है? और हर के लक्ष्य में, हर भारतीय जनता पार्टी, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के लक्ष्य में क्या? गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं की चिंता. यह हमारा मूल रूप से देश को ले चलने का और देश के बारे में इंक्लूसिव रास्ता अपनाने का ये तरीका. You fear a future in which bureaucrats in a state cannot be bullied by the center, so you amend the IAS cadre rules. This fear of irrelevance in the future makes you behave the way you do. You are not content with just our vote. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love. But your fear alone cannot keep the future at bay. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Kennedy tells us that people who want to stop history in its tracks mistrust the present. This government mistrusts the very soul of our republic when it brings in an act to link Aadhaar cards to the right to vote, because you are creating enormous possibilities to disenfranchise genuine voters. You mistrust our Annadatas, who repeatedly told you, don't bring in the farm laws. Even when you roll them back, I think it was more your fear of losing 70 seats in Western UP than any remorse you felt for the 700 plus farmers who passed away. अपनी खूबियों को बयां करते तो शायद मैं गौर करता, मेरी खामियों को गिनाकर तो बहुत लोग मशहूर हुए हैं. आज कांग्रेस हो या कोई और अन्य विपक्षी दल के वक्ता सिर्फ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण की निंदा करने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं.
लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की हर एक उपलब्धि को तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को लाभ पहुंचाया है, जैसे जनधन योजना, जिससे कि करोड़ों नए बैंक अकाउंट खोले गए, जिससे आर्थिक समग्रता को बढ़ावा दिया। आयुष्मान भारत योजना, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभकारी योजना है, जिससे गरीब परिवारों के इलाज में आर्थिक सहायता मिली। Madam Speaker, then this government made rhetoric of 20 lakhs core assisted under Atmanirbhar Bharat Abhiyan, claiming it will help the people to come out the chaos created by the pandemic. Even after 1.5 years more, no one knows how much of this actually reached the people and how it helped the common people. Every time people faces crisis, the Prime Minister will appear before them, a new slogan, and people will look forward. They would get something to cheer off. First came with Acha Din Aane Wale Hain. And people would not have thought that they were going to face Bure Din they have ever faced before in their life. Then he came with the Make in India campaign. But people seen was Selling India campaign, in which our precious gems in the public sector are lost day by day. जो बाकी इस सरकार ने असंवैधानिक जो कदम उठाए उनको नफी करके वो रियलाइज करें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद एहसास भी करें और वो रेस्टोर करें वो रुतबा, वो हैसियत, स्पेशल स्टेटस जो उसको दिया गया था आईन में। तो मायूसी की बात है, अगर सिर्फ एक टनल की अहमियत है, इंडस्ट्रीज़ की अहमियत है, फिर आप क्यों जा रहे हैं ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन करने के लिए? 5 स्टेट्स में जम्मू कश्मीर की तरह एक अफसरशाही कीजिए, 5 अफसरों के हवाले हर स्टेट में आप सारा ये जो इंतज़ाम में लगाइए और फिर फिगर्स पर जाइए, हमने कितनी टनल्स बनाई, हमने कितनी सड़कें बनाई। एम्प्लॉयमेंट आप देखिए, तज़किरा होना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट देखिए सारे मुल्क में और बिलखसूस जम्मू कश्मीर में इस वक्त किश्तवाड़ में एक चुनी हुई नुमाइंदा पिछले कई दिन से भूख हड़ताल पर है। In the 234 members assembly, 230 assembly members voted for that resolution and only 4 BJP members were against it. But when Honorable Tamil Nadu Chief Minister went to meet the Honorable Governor and requested him to speed up the process, the Governor kept that for pending for 5 months. In Delhi, when the opposition MPs wanted to meet the Honorable Home Minister, they were kept waited for 10 days. And they were returned back, and again we were called after 15 days to meet him for 20 minutes. They are also born in this country. They have to live here. They have to die from here also. You should not put them this kind of harassment. The government is doing many things. I don't want to say, muscling the press. Muscling the press, it was said. What is happening? You want to silence the press. You are not tolerating the criticism. That is not fair in a democracy, I would like to tell you. In Kerala, my friends who are saying, new media, you have completely banned its telecast. What is the justification? Even without giving a notice, media once this telecast has been stopped. What is the stand of the government on media? I will tell you, media is fourth estate, the pillar of the democracy. If you hurt that, that's a hurt towards this democracy. Don't keep the democracy like this. Moving on, during question hour in the Lok Sabha, the government addressed questions relating to the availability of drinking water in some states. Members from Maharashtra and Bihar raised the issue of water scarcity in their regions, while MP KG Madhav raised the issue of setting up of ethanol blending plants in Andhra Pradesh. Listen in. एक फर्स्ट फेज 1 में जो पुरानी जो स्कीमें है, पुरानी योजना है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है और दूसरा फेज 2 में नई योजना का अमल करने का काम किया जाता है। मेरी प्रार्थना ऐसे है कि जहां पहाड़ी इलाके रहते हैं, पहाड़ी गांव रहते हैं, तो वहां इंडिविजुअल गांव में पानी की उपलब्धता बहुत कम ही हो रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में सूखा प्रवण जो जिले हैं, लातूर हो, बीड़ हो, ऐसे जिले में पानी मिलना मुश्किल होते हैं। जिन पुरानी स्कीम की वो बात कर रहे हैं, 2 चरणों की बात नहीं है। भारत सरकार ने ये अनुमति दी है कि कोई पहले से अगर वाटर सप्लाई है
और उसके कोई शेष हिस्सा अगर बचा हुआ है तो वहाँ पर एक्सटेंशन के लिए भी हमने गुंजाइश दी है। लेकिन ये सच है कि हमने कहा है कि खुले बांधों के जरिए या नहरों के जरिए पानी का प्रबंध करके हम हर घर तक जल पहुँचाने के लिए संकल्पित हैं और इसमें कहीं DPR बनाने का प्रावधान राज्य सरकारों के पास ही है और अगर कोई गतिरोध है तो आप अपने क्षेत्र में अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। The Honorable Minister, please state whether the government has identified a location in Andhra Pradesh among the 12 locations where it proposes to set up second generation 2G ethanol plants that use non-edible oil seeds and non-agricultural residue. Honorable Speaker, sir, this question relates to the roadmap for E20 and whether the vehicles which will be using E20 will be compatible. Sir, the question that the honorable member has raised on 2G, as far as I am aware, there is one 2G plant using cellulistic thing in Haryana and another one in, I think, the northeast, which is going to make it from bamboos. But if there are any others, I will be happy to find out the information. As far as I am aware, no such decision has been taken. So that's it from us in this bulletin. Thanks very much for your time.